Hello students, this is Kushvi. Today we will study chapter number 1 of geography, that is environment. Now first of all, what is environment? Environment क्या होता है? Environment पर्यावरण होता है. पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ें या कोई भी लोग या कोई भी प्राकृतिक वस्तु आपके आस, जो भी प्रकृति आपके आसपास में एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं. So it can be understood as a place, people, things and nature that surround any living organism is called as environment. अब इसके अंदर कॉम्बिनेशन नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिनन दोनों का होता है. अब जब हम ह्यूमंस की बात करें तो नेचुरल चीज़ों के अलावा ह्यूमन मेड चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं और उन सबको हम लोग किस में काउंट करेंगे? एनवायरनमेंट में काउंट करेंगे. अब नेचुरल एनवायरनमेंट की जब हम बात करें तो उसमें बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. जैसे बायोटिक किसे कहते हैं? जो जिंदा, जो जीव हैं, जो जीवित हैं उन्हें हम बायोटिक कहते हैं, और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? एबायोटिक. तो बायोटिक में क्या क्या आ जाएगा? जो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड इन द एबायोटिक it is the non-living things which are, for example, land. Now you can see the picture. These are the components of environment. The first on the right side you can see human made components. ये सब इंसानों द्वारा निर्मित है. और on the left hand side that is natural. ये सब प्राकृतिक हैं. और नीचे आप देखेंगे कि humans उनका अलग ही they have different things, like for example individual, family, community, religion, educational, economic and political situations. So these are all the fields in which humans are working. Now when we move forward, what is natural environment? What is natural environment? जो प्राकृतिक पर्यावरण, जो प्रकृति के द्वारा जो पर्यावरण प्राप्त हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल एनवायरनमेंट. For example, land, water, air, plants and animals, all these things comprise the natural environment. Now you have studied in your previous class about the layers of our earth. For example, lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. From your previous class you have discussed it. Now lithosphere, what is lithosphere? जो हार्ड पोर्शन है, जो सॉलिड क्रस्ट है अर्थ का, उसे हम क्या कहेंगे? लिथोस्फेयर. सो लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इसके अंदर क्या क्या होते हैं? मिनरल्स एंड रॉक्स. इट इज़ कवर्ड अप बाय मिनरल्स एंड रॉक्स, and you can also see a thin layer of soil on it. Now lithosphere now is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. Now जितने भी आपको मिनरल्स प्राप्त हो रहे हैं, जितने भी आपको पेड़ पौधे और ये सब चीज़ें, जो रॉक्स और सीमेंट इवन आप जो बनाते हो, दैट इज़ ऑल बीइंग टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर lithosphere. Now here everything is given. You can see lithosphere, जो ये ज़मीनी पोर्शन है, जो हार्ड पोर्शन है, इट इज़ lithosphere. जो हवाई पोर्शन है जो आसमान में, दैट इज़ द एटमॉस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर, दैट इज़ द वाटर which is there. And what is biosphere? Biosphere is it consists of the living organism and the non-living organisms. All things are being found in it. So we'll study the next one, that is the atmosphere. Atmosphere क्या? एक पतली सी परत है एयर की that surrounds the earth. Now the atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. Now as we have discussed, what is hydrosphere? The domain of water is referred to as hydrosphere. For example, the rivers, seas, lakes, oceans, etc. And these are also very essential for all living organisms. And when we talk about the biosphere, what is biosphere? जितने भी जीव जंतु हैं, तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम, जो भी जीवित हैं उनको दे टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड. नाउ व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पर एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर हो, या फिर एक वस्तु किसी दूसरे पर निर्भर हो, और वो सब मिलजुल कर एक अपना खुद का क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम. So it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and
मटीरियल, जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं और एक दूसरे को कुछ ना कुछ एवज में देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. Alright, so next topic is human environment. Now what is human environment? In the first picture, as you have seen, this is the human environment. These are all the human environment. अभी हम पढ़ते हैं कि human environment क्या होता है. इंसानों ने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए कई सारी चीज़ों का निर्माण किया है, जिनसे उनका जो लाइफ है उनकी that becomes easy. Now human beings interact with the environment and modify it according to their need. So whatever they want, they modify the environment according to their need. If we see, for example, humans earlier they didn't know how to grow, and they learned. उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो अपनी फसल उगाकर खाना शुरू किया. So this is how, and after that slowly they developed so much that even for transportation they developed various vehicles. अब जाने आने के लिए उन्होंने vehicles डिज़ाइन कर लिए. They started production. उन्होंने सब चीज़ें अपनी खुद की निर्माण कार्य शुरू कर दिए. So as we can see, what in the present scenario, if we see, so you can see that humans have, like, if a person is born, these are the external factors which all affect the humans. So these are the human made resources, for example buildings, parks, bridges, roads, monuments, industries, etc. And the nature has also provided various resources, for example water, air, land, and living things. And based on all these things, people have developed a lot, and they have also formed a community and started following religion. And you can see nowadays education is primitive for a person, and economically it has the humans have grown a lot and have developed a political situation also. Alright, so the question answers of this chapter we will complete in our next session. If you have any doubt, you can send me a message on WhatsApp. Alright, this one more thing is there, that is barter system. It is a system wherein पुराने ज़माने में जैसे लोग सामान के बदले सामान लिया करते थे, so that is called as barter system. जब आप एक वस्तु को देके और दूसरी वस्तु लो, फॉर एग्जांपल पुराने समय में जिसके पास, एग्जांपल के तौर पर अगर किसी के पास गेहूँ और उसको गाय चाहिए, और सामने वाले व्यक्ति को के पास गाय है और गेहूँ चाहिए, तो क्या होता था कि इस प्रकार के मेले ऑर्गेनाइज हुआ करते थे जहाँ पर वो दोनों अपनी अपनी वस्तुओं को एक्सचेंज कर दिया करते थे. बट एट दैट टाइम मनी वॉज नॉट एग्जिस्टिंग, जब पैसा जो नहीं था. ऑलराइट, एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ 5 June is being celebrated as World Environment Day every year. Alright, question answers we'll discuss in our next session. Thank you.